Now, before starting the session, I want to discuss behind the object. What is the objective behind such session? Now, if you try to look at UPSC mains examination, UPSC mains examination will sometime begin. The UPSC mains examination will be next year, September 2021. Now, that is typically, if I say from today, almost 10 to 11 months are there. Problem is that this period when you prepare for UPSC, especially from November till March, momentum for preparation doesn't develop because there is no urgency for preparation. Basically, the mains preparation lacks in this period. What exactly? There are two broad objectives of this session. Is that I'll apprise you what we'll be going to do in the coming months in the 4 month. So if I say from the first week of December till the first week of April. So this is the period of the entire course. There are total 17 weeks in this period. And every week, what we have done that we have divided the entire syllabus into various units. Okay. Okay, so I'll come again. So from December till April, we have 17 weeks. And in this 17 week, we are going to cover the main syllabi. Okay. Now, so what should be done? Now, there are two major objectives. One is that you need to have a target. Target of what? Target of a syllabus that you should be studying. Now, one basic assumption that I have made that people who are preparing for the mains examination, and that basic assumption is that you people have already been through the basic stage of preparation. You have done your basic preparation. We remember this preparation, this mains program will be an advanced program. We will not teach you how to write answers. And we'll not teach you right from scratch how to write answers and all. Yes, we'll tell you how to write answers, how to make a good answer, how to write essays. But it will be a session where we are assuming that students have some basic understanding about the UPSC examination. So how do we start? So let's understand how do we start. So the first objective is the target of the syllabus. जो भी syllabus का एक target बना लेंगे. Now we have GS1, GS2, GS3, GS4 plus essay. So basically we are going to cover all the 5 chapters except optional. Now in this GS1, GS2, GS3, GS4, ideally last year also I conducted this mentoring session. And there were total 33 tests in that mentoring session, but that was in the offline center in Karol Bagh. Because of the COVID-19, a lot of students messaged me asking, sir, what do we do in this mains period? And they personally messaged me that, we are not able to study, the momentum is not there. So I know one thing, that you don't have a target, what to study. And the second is, of course, apart from target, the evaluation part should also be there. So target is what to study. Now I am assuming that you have already read the basics of the examination. I'm not going to teach you from scratch. So what to study? You have a syllabus for the whole week that you have to study. After that week is over, for example, the 14th, I'll show you this. I'll share the schedule that will give you a better picture. Now, if you see the schedule, now the first test will be on December 7, 2020. But this test will only be on current affair. Okay. And there'll be 10 questions on current affairs. So you'll get UPSC mains like paper and you will attempt those current affair questions. We'll mail you the papers. You'll attempt the answers. You will take the printout, write the answers, send back us in the PDF form. We'll evaluate it, and then we'll make the PDF form and we'll send it to you. Then the questions that have been asked, we'll have a doubt session on the entire issues. And also the doubt session will comprise of, maybe discussing how we can improve your answers, what pointers should be there in the answers, what are the, what is the anatomy of good answers. So all that thing we're going to discuss. So that is how we start 7th. But after 7th, you get 1 week. Now on 14th of December, you have economics paper. Now we'll have let's say GS3 paper, GS paper 3 major economics wala part hai, we'll take that syllabi and we'll make 10 questions from that. And the 10 questions plus there'll be 5 questions on current affairs, the contemporary issues. So you'll have a test of 10 plus 5, 15, papers.
15 questions. So you know that you have a target for whole 1 week. I have to revise my economics part this whole 1 week. Next year, there's a test on economics plus current affair. Current affair will always be there. For the entire 4 months, you have to cover current affair. So current affair will comprise of all the sections: polity, governance, IR, economics, social issues, social justice, Indian society, everything will be there. So in the economics part, I'll give you 10 questions and the contemporary issues are there. So there'll be 15 questions. Now remember, I am a teacher of economics, polity, Indian society, some current issues. So I'll be covering my part. Uh, Neeraj sir is going to cover the geography part, disaster management part, uh, environment ecology part. Manas sir is going to cover history and ethics part. So we have three people who are going to cover different part of the syllabus. Now, means I'll prepare questions on economics and current affairs. Manas sir will prepare questions on ethics. Now, people who are preparing the questions, they'll be conducting the proper evaluation also, and they will also be taking the sessions on that particular issue. So that is how the entire syllabus that we're going to cover. Now you can see here from 7th December we're going to start, because it's the first week, so we just have current affair test. And what is the syllabus? Now वो current affair लास्ट वीक का जो current affair है उस पे आपको क्वेश्चन हम देंगे, 10 मेंस का क्वेश्चन होगा. Then we are trying to cover the whole syllabus. For example, on December 21st, you'll have polity, then modern history plus world history on 28th. January, we'll have physical geography, then IR, then environment ecology, disaster management, current affair, internal security in society, current affair, art and culture history, remaining part of the history, that is ancient medieval, current affairs, human geography, agriculture plus current affair, polity and governance, social justice plus current affair, ethics plus current affair, economics plus current affairs, science and technology plus current affair. So if you see, we have covered the entire GS syllabus, and you're going to get questions in each of these sections. The first part, the 10 questions will be from the sectional. ये आपका देखोगे तो starting में sectional test है. In the first, you can see the first 14 tests are sectional tests. There are total 18. Sorry, it is 18 week syllabi. So first 14 tests are sectional tests. In every sectional test will be of 10 questions, and there will be main questions, 5 questions on contemporary issues or current issues. So आप पहले 14 tests में you'll attempt 15 questions, and then you have GS1 to GS 4, GS2 and GS3. You will have last 4 weeks will be one paper for every week. वो full paper होगा 20 questions का. That will be like mock for what you write in the mains examination. Now there are some certain basic things that I'm assuming. The first basic thing that I'm assuming that you will share, और आप अपने हिस्से की ईमानदारी maintain करोगे. For example, the 10 question will require 1.5 hour. Similarly, 10 plus 5 would require 10 questions plus 5 would require maybe 90 minutes plus 30 minutes. That is 120 minutes. So that means 2 hours. Okay, 2 hours and 3 hours. So that is how based on the timeline will be there based on that. So 1.5 hour, then further 30 minutes for 5 questions. Like that, we're going to cover the entire section. So that is it. Now, what I'll do, I'll put you on mute, and now I'll take your doubts. And just hold on. Okay. Now I'll unmute each one of you, and जो भी जिसका भी individual doubts है वो मुझसे पूछ सकता है. And one more thing, as I mentioned, this is a tentative plan that I have made for you people for the coming weeks. That is almost 18 weeks. After that 18 week, or in between also, if you have any specific requirement, you can tell me. Now remember, this is 18 week schedule for GS 1 to 4. There'll be separate essay sessions plus essay tests. So that will have a different schedule. So we'll send you the essay test and schedules differently. So there'll be, maybe I'll have to discuss, because essay is taking, Manas takes the essay part. So I'll have to discuss, the tentative dates and all those areas. So, but we'll communicate that in 1 week. The essay, the series, he'll take session on essay, how to write good essays, the anatomy of a good essay, maybe last few years, what kind of essays are being asked. Then he'll choose certain topics of essay on UPSC, for which have come in UPSC, and maybe he'll tell you the pointers that can be written in a good essay. And then after that, the evaluation will be, then the test will be there, you'll attempt, and
this is that is how the essay will be conducted. So maybe three sessions on essay, 3-4 sessions on essay, and the proper test will be there. Now, number of tests I have not decided, but probably 2-3 tests will be there on essay as well. So that is the basic approach for the next 4 months for the mains preparation. I would advise you to stick the questions and the answers. The questions will be prepared in a very, people make a lot of effort in making those questions. We'll evaluate them properly. I am the course mentor for the entire area. I'll be focusing on ensuring that you get good feedback, good inputs. We have a proper format also, how we'll evaluate the answers. All that thing will be there. So that is all. Now I'll unmute you people, and जो भी आपका doubt है, you can ask me your doubt one to one. You can put your doubt, and if any doubts are there, and so now you can unmute yourself and you can ask any questions if you have. किसी को कोई डाउट है? Yes. Any doubt? Apurva, Niharika, Rahul, Sanat, Shivani. You can, if you don't want to speak, you can type your question. Because I want it to be two-way. This is the plan that we have for you. Now, if you want any input, if you want, maybe more effort, or maybe few new things to be incorporated as per your preparation requirement, I know if that is possible, we'll try to incorporate that as well. So, आपको अच्छा, one more thing. Apart from them, you are writing your own answers. आप अपने answers भी लिखते हो. So you can send your own answers to me as well. For example, if you're writing, now you have your own study plan as well. So let's say if in your study plan, you're reading, subject X. Okay. Now you want to write answers here and you want them to be evaluated. Send them us. So it will be open. We'll provide you tests, but आप अपने end से भी 2 answers, daily answers लिखते होगे या weekly लिखते होगे, वो भी आप submit कर सकते हो. We'll evaluate them. I'll be evaluating, because I take current affair on a regular weekly basis. So that will be there. Now, apart from the test, we'll have two live sessions also. And this 2 live session will comprise of, the first is of course the doubt session. Now your doubt session ka jo time hoga wo basically 2 hours hoga, but if needed we can stretch it if doubt still persists. Then after that, this doubt session will mainly link with the test. इसके अलावा भी कोई डाउट्स आपको होते हैं तो वो उसके लिए if needed we can put extra session also, and there'll be weekly current affair test as well, a weekly current affair session as well. So I would urge you to be a part of the weekly current affair session. If you have any you can attend those, and that will major issues को हम जो week में होते हैं उनको मैं cover करता हूँ, so you can attend. So there'll be 2 live sessions that will be part of that. Apart from that, any specific, if you, let's say you have a doubt, आपको एक doubt है in certain specific area, okay, which is beyond the normal study schedule that we are having. Now, I would urge you, because we have a group where you're already a part of the group, you can personally message me. Each one of you are my old ISH students. So each one of you can reach out to me and tell you a specific doubt. I'll make a plan and we will work on that. Okay? Yeah, हाँ राहुल, बताओ बेटा. You have any doubt? सर एक छोटा सा डाउट था. हाँ बताओ बेटा. Yes sir, I have a doubt. बोलो. Sir, as I was able to see in the there was only one ethics week. हाँ, एक ethics अगर सर उसमें हम कोई मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ethics ऐसा पार्ट है. हाँ जी सर. सर एथिक्स का जो एग्जाम है वो एक ही वीक में है, मतलब पूरे वीक में हमें 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 10+5 मिलेंगे. तो सर अगर एथिक्स में हम कुछ इशू होता है, प्रॉब्लम आती है और आप हाँ जी सर. एथिक्स का एक और पेपर है ना, उसमें कुछ इशू आता है, मतलब पेपर भी है ना. GS4 का भी एक पेपर है ना शेड्यूल में. नहीं सर, फुल पेपर. हाँ जी सर. बाय चांस उस एथिक्स वाले जो वीक में अगर कुछ इशू आता है और वो आप वीकली वो दोगे हमें फीडबैक, तो सर उसका इम्प्रूव करने के लिए दोबारा सर ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए कि एथिक्स का 2 बार हो, ताकि सर दूसरी बार में कुछ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिल सके. कोई दिक्कत नहीं है. सर वीकली रिव्यू मिलेगा उसमें, सर वीक में हम कुछ भी लिख रहे हैं. हाँ ठीक है, एक काम करते हैं. तो तुम चाहते हो कि एथिक्स का एक सेशन और हो जाए, राइट? एक टेस्ट और हो जाए. दैट इज व्हाट यू वांट, राइट? हाँ जी सर. राहुल, जहां तक फीडबैक की बात है, जहां तक सेशन की बात है, दैट इज कंप्लीटली ओके.
एक सेशन, एक टेस्ट और करना होगा, टेस्ट इज रेडी, टेस्ट मिल जाएगा बेटा, एक वीक का मैं एक्सटेंड कर दूंगा टेस्ट को, कोई इशू नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहते हो, और जहां तक डाउट आपके हैं, आप कहोगे तो मैं डाउट के सेशन एक आध एक्स्ट्रा लगा दूंगा, नॉट एन इशू। मानस सर को बोल के मैं उनके एक्स्ट्रा सेशन लगा दूंगा एथिक्स से जुड़े हुए, और इफ यू वांट वन मोर टेस्ट ऑन एथिक्स, आई कैन हैव वन मोर टेस्ट। बेसिकली अगर आप शेड्यूल देखोगे तो एथिक्स में एक फुल पेपर है, दैट इज 20 क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव हाफ पेपर दैट इज 30, तो 30 क्वेश्चंस एथिक्स में है। और ठीक है, अगर एथिक्स में चाहते हो तो मे बी, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और 17 वीक्स में ही कवर करना है हमें, तो इसलिए जो है एथिक्स का पहले मैंने 2 टेस्ट डाला था, बट बाकी एरियाज को कवर करने में दिक्कत हो रही थी, मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले एरियाज में जो है मैंने उनके डबल सेशन रखे हैं, तो ठीक है, उसमें मैं एक सेशन बढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, उसको एक एक्स्ट्रा टेस्ट कर लेंगे, ठीक है सर। एक्चुअली एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। राहुल बोलो, तुम्हारी सर आवाज। इशू ये है कि जो एथिक्स की क्लास, एथिक्स का जो सर एथिक्स का जो टेस्ट है सर, अगर वो हम एक वीक में देते हैं तो सर हमें प्रॉब्लम्स जो हमारी एथिक्स है उसमें एक वीक में पता चलेगी। और सर टेस्ट जो होगा सर वो 20 मार्क्स का आपको मतलब प्रेशर देना पड़ेगा पूरा। तो सर मैं एक सेशन इसलिए एक्स्ट्रा मांग रहा था क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कम या जो बेसिक चीज हम जो लैग करेंगे सर एथिक्स एग्जाम में, सेकंड पार्ट में कर दे, बस इसलिए एथिक्स वाले पे का सर, बाकी तो सब सही है। एथिक्स वन पेपर में इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ओके। वन एक्स्ट्रा पेपर, एक्स्ट्रा टेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, एनीबॉडी एल्स, और कोई डाउट है स्पेसिफिकली? नो सर। नो, ओके। अच्छा, ये प्लान ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपना पूरा सिलेबस को ढंग से कवर करना है, एंड इफ यू कवर देम द सिलेबस प्रॉपरली, आप 4 महीना इस सिस्टम पे ट्रस्ट करो, गिव द टेस्ट प्रॉपरली, ट्राई टू अटेम्प्ट बी रेगुलर फ्रॉम योर साइड, अपना सिलेबस ऑलरेडी आपने यूपीएससी की पढ़ाई कर रखी है, यू ऑलरेडी डन प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड, आई एक्सपेक्ट a good revision from both current affair and your sectional area, and I want you to attempt these tests properly. Okay, so that is the basic objective of the test. Okay, so yes sir. okay, so Apurva has a question, can there be a session or test on art and culture? Acha, you want, Apurva, you have a specific requirement for Apurva, we already have a test on art and culture, देखो ना, if you see the schedule, अभी ये शेड्यूल टेंटेटिव था, मैंने अभी इसको फाइनल नहीं किया, आई थॉट पहले आपसे शेयर करूंगा, देन आई विल मेक इट। सो यू हैव आर्ट एंड कल्चर ऑन फरवरी। नाउ ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर बेस्ड ही टेस्ट होगा, यू नो, बिकॉज इफ यू सी इन जीएस यूपीएससी मेंस पेपर 1, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे कम फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, इवन मेडिवल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन ही आते हैं। नाउ डू यू वांट वन मोर टेस्ट ऑन आर्ट एंड कल्चर, दैट इज व्हाट यू वांट? Sir, can you hear me? Yes, Apurva, tell me. Sir, the syllabus for art and culture is very wide. तो मतलब समझ ही नहीं आता कि उसको prelims point of view से कैसे पढ़े, and mains में something else comes, and जो source है उसमें काफी ही crisp information दिया रहता है, and in the exam they expect us to expand on that. So either before that we could have a session, और बाद में भी मतलब कर सकते हैं। एक काम करो, अच्छा एक बात बताओ अपूर्वा, कैन यू अटेंड सम 8-10 लेक्चर्स? आप 5-7 लेक्चर्स आर्ट एंड कल्चर पे अलग से अटेंड कर सकते हो एक्स्ट्रा? यस सर, आई कैन। हाँ, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर जो है अभी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है एंड आर्ट एंड कल्चर विल बी देयर, सो आई कैन आस्क मानस सर, जो बैच चल रहा है ऑनलाइन का, आई कैन आस्क मानस सर टू कंडक्ट द आर्ट एंड कल्चर एरिया प्रॉपरली। ऑलरेडी हुआ था व्हेन द कोविड स्टार्टेड ड्यूरिंग मार्च एंड वीक ऑफ अप्रैल, बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर कवर हुआ था, एंड मानस इज गोइंग टू कवर आर्ट एंड कल्चर इवन बेटर। वो कह रहे थे सर आई हैव ऑलरेडी अ प्लान, मैं करना चाहता हूँ, सो आई कैन अरेंज, मतलब वो सारा सेशन आप लोग आप अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, उसको मैं करा दूंगा। अब मुझे बस, मैं ये टेस्ट को थोड़ा सा फिर ट्वीक कर दूंगा, टेस्ट डेट आर्ट एंड कल्चर को नीचे कर दूंगा, ओके? यस सर, श्योर। एंड दैट वे यू कैन डू दैट, ओके? हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ सर, सर मेरा डाउट ये था कि सर एसए से रिलेटेड, सर इसमें जैसे जो मैं शेड्यूल देख रहा हूँ, तो सर उसके डेट्स मतलब किस हिसाब से होगा, मतलब वीकली एक ऐसे होगा या फिर 4 वीक्स? नहीं, ऐसे इतना नहीं होगा, ऐसे के 2-3 टेस्ट होंगे बेटा, और ऐसे के 2-3 सेशन होंगे, 2-3 टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट ऐसे कर नहीं पाओगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा।
बिकॉज तो लेकिन ऐसे में भी सर वो मतलब जैसे 3-4 टाइप के ऐसे अलग अलग होता है, जैसे मतलब एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट होता है, एक करंट अफेयर, एक सोशल इश्यूज, एक एजुकेशन। तो मतलब उसमें मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा अगर वैरायटी क्वेश्चन मिलेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें भी रोहित ऐसे में ना सुनो, पहले ऐसे में पहले तुम्हें सेशंस होंगे प्रॉपर। सेशंस मींस यू सर जो है 2-3 सेशन लेंगे ऑन ये जो तुम कह रहे हो कि फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, वो सारा वो कवर करेंगे 2-3 मिनिमम 2 लेक्चर्स में, ठीक है। और वो ऐसे कैसे लिखना है, कैसे आएंगे वो सारा, देन ही विल टेक 1 or 2 ऐसे टॉपिक्स, और उन ऐसे टॉपिक्स को वो डिकोड करेंगे इन द क्लास कि भाई अगर इस ऐसे टॉपिक आता है तो आप कैसे लिखोगे, यू नो, फ्रॉम यू नो हिज ओन पर्सपेक्टिव। सो वो 2-3 सेशन के बाद टेस्ट होंगे। तो बेसिकली वो आपको वो 3 होगा या 4 होगा, वो मैं मानस सर से डिस्कस कर लूंगा। तो वो सेशन तो होंगे। नाउ इफ यू वांट टेस्ट ऑन ऐसे, आई डोंट माइंड, वी कैन हैव अ टेस्ट, मैं 4 टेस्ट लगा दूंगा। सी इट इज नॉट अबाउट, यू नो, कोई दिक्कत नहीं है वो एक गिवन टाइम में सर अगर ज्यादा उसका भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर ये पूरे 4 मंथ्स में अगर हमारा ऐसे का भी एक प्रैक्टिस साथ में रहेगा तो ऐसे बहुत स्कोरिंग चीजें जैसे एथिक्स है, वैसे एक ऐसे भी बहुत मतलब ऐसे पैरेलल चलेगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, फोर्टनाइटली ऐसे का टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हर 2 वीक्स पे। हाँ, ये ठीक है सर। ठीक है ना, तो पहले ऐसे का सेशन होगा, फिर फोर्टनाइटली टेस्ट लगा दूंगा, ठीक है। तो हर 14 डेज पे ये टेस्ट के अलावा होगा, ये टेस्ट के अलावा होगा ऐसे, ठीक है, वो आपको अटेंड करना होगा। बट उसमें वो 1.5 आवर का टेस्ट होगा, 3 आवर का नहीं होगा। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप 3 घंटे लिख नहीं पाओगे। सी मैं आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकल, यू नो, डुएबल टारगेट। अगर मैं यहाँ पे आपको 15 टेस्ट, हर वीक में 2 टेस्ट कर दूं, 20-20 क्वेश्चन कर दूं, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। यू विल 2 वीक में, 3 वीक में आपके यू नो फटीग आ जाएगा, बिकॉज आपको पढ़ना भी है। सो आई एम पुटिंग अ टारगेट विच इज डुएबल। अभी जो ये डुएबल टारगेट है, बिकॉज यू हैव ऑप्शनल इन योर माइंड, यू हैव, यू नो, रिविजन ऑल्सो। आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो प्रीलिम्स भी बैक ऑफ द माइंड पे है। ओके, सो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। सो हमको एक बैलेंस लेके चलना है, वेयर मैं जैसे मेरा एवरेज है कि 2 क्वेश्चंस ऑन एवरेज आपको, मतलब अगर देखते हो 15 क्वेश्चंस पर डे, तो वीक में से 15 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चंस पर जो है आपको मिल जाएगा। सो मैं ऐसे का एक कर देता हूँ। राहुल का, यू नो, एथिक्स का रिक्वायरमेंट था, सो 1 एथिक्स टेस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस वही था सर, थोड़ा ऐसे पे भी और नहीं कोई इशू नहीं बेटा, हो जाएगा। सी मेरे पास आई हैव माई टीम, कंटेंट टीम है, पेपर पढ़ाना, क्वेश्चन पढ़ाना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ बिकॉज आई नो द प्रोसेस, मुझे पता है कि स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं वो कितना कितना वो कर पाते हैं। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन दूंगा तो आप अपने रेगुलर रूटीन में उसको कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ प्रैक्टिकल टारगेट। और ऐसे को मैं एक फोर्टनाइटली कर लूंगा। अगर आपका बैंडविड्थ होगा आप 2 ऐसे करो, टॉपिक्स तो रहेंगे इनफ, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ये फोर्टनाइटली हो गया। थर्ड इज आर्ट एंड कल्चर। तो क्योंकि सर वो जो ऐसे का जो जब मेंस में आंसर लिखेंगे ऐसे राइटिंग, तो वो अगर वैसा सिमुलेट हो जाए अगर अभी भी वैसा पूरा, ठीक है, एक काम करते हैं, तो बेसिकली 2-3 टेस्ट आपके नॉर्मल कर देते हैं और बाद में 2 टेस्ट फुल कर देते हैं, ठीक है ना। 2 फुल टेस्ट ऐसे 3 आवर के 2 फुल ऐसे टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, वो एक बार 3 आवर का भी अगर लिखने का प्रैक्टिस एक बार पहले हो जाए बिफोर हैंड, मेंस प्री के पहले, तो फिर उसके बाद में बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा फिर कि हाँ थोड़ा प्रैक्टिस पहले भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे में मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। फोर्टनाइटली आपको अभी टेस्ट लिखना होगा, मे बी थोड़ा सा जब प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन विल हैव मे बी जनवरी और फेब में मैं 2 फुल टेस्ट कर दूंगा ऐसे के, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, चलो डन। हाँ सर। राहुल, PSIR का हम लोग अलग से बात कर लेंगे, ओके। आई एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, सो एनी मोर डाउट यू हैव? आई थिंक किसी और का कोई डाउट? निहारिका को एक्सप्लेन हो गया, तो राहुल आपका की डाउट है वो लेंगे। शिवानी बेटा, अच्छा वन मोर थिंग, आप अपने आंसर्स मुझे भेज सकते हो। आंसर्स दैट यू हैव, यू कैन सेंड इट टू मी, योर आंसर्स, आई विल इवैल्यूएट देम, ओके। सो नाउ forget everything. Now tell me, how is the preparation going? How many of you feel that preparation is has not started, or it is not going off on track? Basically, if I say 90% of aspirant in this period, they are not happy with their preparation. So I'm assuming कि आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं एक अंदर से मन में फीलिंग है कि प्रिपरेशन अभी हो नहीं रहा है, and psychologically the COVID is there. Now remember, COVID की वजह से आपकी प्रिपरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, because
you people are already into a self isolation mode जहाँ तैयारी आप कर रहे हो. So COVID should not make a difference, but psychologically the days of COVID, normal routine life has disrupted. So that is the reason why there is a feeling कि मेरा preparation भी जो है impact हो रहा है. A lot of people in this period because of the COVID they have not given their examination also. Okay. Yes, Apurva has a good question. So how to overcome answer writing inertia? चलो, तो आंसर राइटिंग इनर्शिया में क्या करना होगा? So Apurva is saying that how to overcome the answer writing inertia. तो आंसर राइटिंग इनर्शिया में होता क्या है? The biggest problem is that the practice has stopped. Now after 14th, Apurva, in fact Monday से तो inertia अपने आप चला जाएगा because the test is already there. Now what you can do is that you can see, you have to tell yourself that I have to devote certain time for my writing. You have to devote this some time for writing, and you can't skip this time. Now remember, this is like a maybe sacrosanct activity that you'll do. आप कुछ भी करो, बट जैसे आपने सोचा कि मुझे आज 2 आंसर लिखना है, तो होता क्या है, अभी लिख लेंगे. ओके, एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट की प्रोक्रेस्टिनेट करने की. फोकस अभी नहीं, अभी दोपहर में लिख लेंगे, अरे अभी मन नहीं कर रहा है, अभी मुझे ये पढ़ना है, आई हैव टू रिवाइज दिस, आई हैव टू रिवाइज दैट. सो मोमेंट यू दैट थिंग कम्स इन, यू टेंड टू पोस्टपोन थिंग्स, और तब तक शाम आ जाती है. Then you suddenly start feeling, "Arey, I'm not tired. I don't feel like writing. Okay, I'll do it tomorrow." So you are pushing, you are procrastinating, you are deferring your action. So that is a very common thing which happens with every aspirant. Now for that, you have to devote certain time. Now आप एक time fix कर लो. So in the evening, maybe 7 p.m. or 6 p.m. or whatever time, या फिर रात में आपको अपना personal space मिलता है. 11 p.m. के बाद, there is a silence in the house or silence in the home. Can say 11 to 12 p.m. पे मैं I'll write something. I'll write an essay, or I'll write 3-4 questions. Now remember, for that you have to plan. You have to plan that which section आप लिखोगे. So उसमें आप पहले से revision कर लो, पहले. Maybe you can set that tomorrow at आप answer writing करोगे. Now remember, this has to be alternate days. I would not advise in the beginning to daily answer writing करो. Do it alternate days. The reason I'm telling you that when you make it daily, then it is like a pressure that मुझे daily करना है. What I would say that do alternate days, but extend the time period. Instead of writing, maybe you can extend up. On an average, I expect 30 minutes of answer writing every day. But आप 30 minutes से 1 hour करो, and you do it every alternate days. So that way you will develop a habit. और इसमें आप define कर दो, मेरे को ये कल मेरा ये section में मैं कुछ questions मैं attempt करूंगी. The best way to maybe is to go through previous year question paper. आप previous year mains का question उठाओ. If you look at the previous year mains question 2013 onwards, even today, आज भी अगर आप बात करते हो, there are 70 to 80% questions are still relevant. आज भी relevant है. They'll make sense. Especially in GS1 पूरा relevant नजर आएगा आपको. GS4 ethics पूरा relevant नजर आएगा. Similarly, even in GS2, you will find certain topics which are with static area, it will be relevant. Even if you go with GS3 economics, economy, I'm teaching from past 10 years, nothing much have changed on economy. The same problem of unemployment, the same problem of, manufacturing not doing well in India, the same problem of fiscal mismanagement. So the problem are repeating. Our problem is almost the same. Maybe some little changes have happened. So that dynamics have not changed. तो आप देखोगे 70 to 80% questions are relevant. और अभी तो हमारे पास एक टारगेट भी है टेस्ट का, तो अभी वीक में टारगेट रहेगा. सो फॉलो दिस शेड्यूल इन द बिगिनिंग टिल द टाइम यू फॉलो दिस अप्रोच. मे बी 30 minutes or 1 hour of alternate करो. स्टार्ट स्लोली, पहले आप 30 minutes से करो, देन आफ्टर मे बी 2 days for 30 minutes, then you can extend it for 1 hour. Okay, so that is a common problem with every aspirant is facing. I hope Apurva, my answer makes sense. You have to define, you have to set things. If you don't put a pressure and timeline on the task that you do, believe me, that will not happen. And remember, you have to take ownership of your preparation. Nobody else will come and prepare for you. Okay, you have to tell yourself that this is something. And remember, this journey is unique. Everybody will go through these challenges. Will go through the challenge that you're going through. So it is not that only you people are not doing it. You people are facing this. Achha, one more thing. Always remember, Apurva, you could be good. But there are always people who are doing,
and it is the hard work which matters. The talent is secondary in this preparation. और अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है. Always remember, if you are not doing, there is somebody else is doing in this in this India who is preparing for the examination, and he and she, whoever that person is, will eventually have an edge over you. So you say that if I'm not doing, or you have a reason for not doing it, maybe that problem is your own problem. You'll have to come out of that, and that then only ये जो comfort zone है आपको, उसको आपको break करना पड़ेगा. Okay? And you can call me, and everybody, remember, you all have my number. You can speak to me personally for small little doubts, for answer writing. मुझे ये दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत आ रहा है. And remember, there is no time for that. You can call me. मुझे बस एक बार मैसेज करोगे, सर कब बात करना है, कब फ्री है. I'll tell you, okay, let's speak this time. So हम लोग बात कर सकते हैं on a regular basis if needed, because I am genuinely interested on pushing students who have good potential and who might do well tomorrow. Because this journey has become alone now. Preparation जब कर लेते हो कोचिंग के बाद, वो जर्नी alone हो जाती है. There's nobody who's going to reach out to you. But as a person who has gone through the phase and challenges, I understand that. I've given UPSC attempts. I've faced interview multiple times. I understand the challenges of the going through this challenge, the phase. Okay. So keep your faith, and take a leap of faith. Put effort. The day you get selected, जिस दिन आपका prelims निकलेगा, उस दिन आपका mains निकलना चाहिए. That should be the objective. Shruti, you can take my number from team member. Okay. Yeah. Okay. So that is all. Any more questions and doubt? No questions. Sanat, Niharika, I think doubt हम लोग clear हो गया था. Shivani beta, any doubt you have? Okay. Okay, चलो ठीक है. Sanat, you call me and speak to me how. I want to know how things are going at your end. Okay. Sure, sir. I will. हाँ, मुझे call करना, एक बार हम discuss कर लेंगे. I want to know what are you doing, और अगले साल कैसे attempt देना चाहते हो, and what is there in your mind, and what is your approach. I just share it with me. I might give. Sure, sir. Okay. For sure, sir. For sure. ठीक है, चलो. So that is all for today, guys. Should I close the session, or you still have doubt? We have another 5-6 minutes for session. Should I close it? Okay. Chalo. So that is all for today. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you, sir. Okay. Apurva has a question. Sir, can we have few tips? Okay. Okay. So tips. Chalo. Tips regarding answer writing you want to know? On integrating current affairs. Okay. ठीक है. Chalo. Let's discuss that. With answers. ठीक है. So Apurva has a question that how to integrate your current affairs with your answers. Now, the first step to this preparation is that the current affair has to be segregated. This is the first step. So when आप जब prepare करते हो, I'm sure you must be preparing. Now, there are two kind of formats. When a student, when they study current affair, they have two formats. One is that they make notes date wise. The second is they do it section wise. It can be section wise or you can say syllabi wise. जब हम लोग prepare करते थे, so we had only 2 GS papers. Okay, so and in one paper we had 5, 6 papers. So it was it was difficult for us to have a section wise. तो हम subject wise बनाते थे. But today you can have paper like GS1, GS2, GS3, GS4. आप अपना जो notes बनाते हो current affair का, जो आप material update करते हो, you can have section wise GS1, or you can have a subject wise as well. So this is the first step. Now remember, when you're reading economics, now you have economics section ready in terms of current affair. आप उसमें जो है उसको read कर रहे हो. और अगर आप date wise बनाते हो and you feel that it's not possible to go backwards and put it, so what you can do is that you can जो आपका जो
आपका जो नोटबुक है आप वहीं पर मे बी हाइलाइटर से आप सेक्शंस को, जैसे इकोनॉमिक्स है तो वहां पे आप ई बना दो या कुछ हाईलाइट, कोई अपना एक सिंबल या कोई एक मार्किंग कर दो, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट ये जीएस पेपर 1 इकोनॉमिक सेक्शन है, ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक सेक्शन है, दिस जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन है. So accordingly you have to segregate the current affair, and then after segregation the revision should be parallel. Now remember, when you have to write on answers on contemporary issues, जितना आपका रिवीजन अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप आंसर लिख पाओगे, बिकॉज द रिकॉल फैक्टर इज गोइंग टू बी देयर. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट. दे फील कि हम आज सिर्फ पढ़ेंगे, रिवीजन हम 1 महीने बाद करेंगे और मे बी 7th डे ऑफ द वीक करेंगे, हम संडे का, हमारा संडे का सेकेंड हाफ रिवीजन हो जाएगा. नाउ moment you make this such kind of maybe wishful target, that does not work. Why? Because संडे को आप सेकेंड हाफ में रिलैक्स हो जाओगे एंड रिवीजन आपका ढंग से नहीं हो पाएगा. रिवीजन शुड बी कॉन्करेंट. So whatever you are studying, you make sure your revision is concurrent. आप पैरेलली अपना करंट अफेयर का रिवीजन भी करते रहो, so that moment a contemporary question comes in, you should be in a situation to write. So this is the first step. The second step is of course, यहाँ पर जो आपने segregate किया कंटेंट, यहाँ पे there are two things. Either you have facts and or you have certain opinion or arguments which are there. Now this is the first. तो ये जो opinion arguments आपका होता है, that can be in reference to certain questions. In reference to certain question, what you can do is that you start using them in the answers. Now, as far I know, Apurva, जो आप आंसर लिखते हो आप काफी रिलेटिवली ठीक से यूज करते हो. There is nothing wrong in them. I'm not sure how many कितना टाइम पहले आपने लिखा होगा, बट जो भी आपका फैक्ट या आर्गुमेंट या ओपिनियन होगा उसको आप यूज करना स्टार्ट कर दो. You can start using them in the preparation or answer writing on regular basis. तो आप उनको यूज करना शुरू करो और उसको रेगुलर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका यूज अपने आप हो जाएगा. एंड देन probably then we'll look back and see how you can integrate it better. जितना ये फैक्ट और आर्गुमेंट ओपिनियन, जितना इसका रिवीजन होगा उतना आपका सेल्फ ओपिनियन भी डेवलप होगा. बिकॉज आई एम ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर ओपिनियन ऑन द इशू, बिकॉज यूपीएससी इज गोइंग टू जज ऑन द ओपिनियन विच इज योर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. UPSC will look at the novelty element. People who score well in PSIR optional या कोई भी optional में score करते हैं, or the optional should be dynamic, of course. I'm talking about not the static one. The dynamic optional जो भी होते हैं, या फिर GS में answers में, if there is a novelty in your answer, if there is a uniqueness, if there is a extra viewpoint than what others have written, which is beyond the normal textbook or which is your own, believe me, you'll get. मैं check करूँगा तो मैं आपको 0.5 marks extra दूंगा और 1 mark extra दूंगा. Because that is what, and how these opinion develop, they will develop with better revision and better practice. Okay, जितना आप revision करोगे उतना आपका जो है understanding will be more solid, and at the same time you will be able to develop your opinion. Okay, Apurva. So this is the last question. The session is about to end. I hope and is it okay, Purva? Okay, chalo. Okay, thank you very much, everybody. God bless you. Take care. So there's one more session on Sunday, how to prepare mains examination. आप attend कर सकते हो, but not needed. Be ready for the test on Monday and prepare the current affair. पूरे week का current affair आप तैयार करो and be ready for the test on Monday. Okay. Thank you, sir. चलो, take care. God bless you.